Okay. Good morning, dear students. Welcome on Maths with Zohaib Malik again. So today I'm here to solve another paper for O-levels students. As you know, the exams are coming. So now I have started to solve the May-June series 2021. So today we are gonna solve this paper. Let me share you the screen. Okay. I hope so that this is visible to everyone. So today I'm gonna solve May-June 2021 and the paper variant is 1-1. तो अब इससे related हमने काम करना है. I hope so that everyone know about this thing. The paper is of 80 marks and its given time is 2 hours. तो अब उसको हमने mind में रखते हुए solve करना है because the time is very important to manage बेटा. अगर टाइम मैनेज हो जाएगा देन द प्रेशर का जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है ना वो शॉर्ट हो जाती है क्योंकि प्रेशर कहाँ से बिल्टअप होता है. नंबर 1 एक तो क्वेश्चन मुश्किल आ जाना. नंबर 2 अगर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं लेकिन टाइम शॉर्ट है तो वो एक अलग किस्म का प्रेशर है. तो हमने टाइम को बड़ा फोकस करना है क्योंकि टाइम है तो फिर हम सोच सकते हैं एक डिफरेंट एंगल से एक डिफरेंट लेवल से. अगर टाइम नहीं है तो फिर वो स्टूडेंट दे यूज टू परफॉर्म अबव द एवरेज. तो हमारे पास उनका भी जो थिंकिंग लेवल है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाता है. ओके, लेट्स स्टार्ट वर्किंग अबाउट दिस थिंग. सो वी आर गोना स्टार्ट दिस पेपर. हियर वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 1 द स्क्रीन. सो दिस इज 74.6 times 10 minus 3.89 times 100. So we are going to subtract them. So this would be 746 and 3.89 times 100 would be 389. And the difference would be 746 minus 389. This is 16. 16 minus 9 is 7. 3 minus 8 is not possible. So this would be 13 minus 8 is 5 and 3. The final answer is 357. So now 5 plus 3 into 2 minus 1, because we are supposed to use the Demas rule. This would be 5 plus 6 minus 1, and which should be 5 plus 6 is 11. 11 minus 1 is 10. So 10 is the final answer. So from the numbers above, write down a factor of 70 above these. From these all numbers, what would be the factor of 70? This is only 14, because 14 5s are 70. A cube number, and here I can see this is a cube number because 125 is equal to 5 cube. So this is 125. And irrational number, irrational numbers are under the square root. तो हमारे पास square root के अंदर दो ऑप्शन है, this one and this one. So here it would be giving the integer like plus minus 5, लेकिन square root 8 एक ऐसा नंबर होगा जिसका अगर हम square root लें तो इसके जो आंसर्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट होंगे और there would be no limit. तो it means square root 8 is the best option. Okay. So now 3 over 7 plus 2 over 5. Let's take the LCM. LCM लेने का बड़ा आसान तरीका आपको बताया हुआ है कि जी you are supposed to do the cross multiplication like 3 into 5. Then there is plus, the plus 2 into 7 over 7 5 the 35. So now this is equal to 15 plus 14 over 35 is equal to 29 over 35. So this is the final answer. So now 2 by 3 of 6 by 11. 2 by 3 of means multiply 6 by 11. अब हमने कटिंग करनी है तो बेस्ट इज 3 1 3 3 2 6. So this is 2 to the 4 over 11. 4 over 11. Okay, what next? Our record is kept
Question number 4 is a record is kept of water level in a harbor. One morning the level is 5 meters, the afternoon the level is -2 meter. Find the difference between the level in the morning and the level in the afternoon. Okay, it's very simple. We need to find the difference. Difference means to subtract. So 5 meter minus -2 meter. So this would be definitely equals to 5 meter minus plus 2 meter is equal to 7 meter. So 7 meter is the answer. Okay, one day the temperature midday is 9 centigrade. At midnight, the temperature has dropped by 15.3 centigrade. Find the temperature at night. It means in the morning this was 9 centigrade, and drop means subtract 15.3 centigrade. So now the bigger value is 15.3 and 9. Let's put the zeros. Khali spaces पर 3 minus 0 is 3. 5 minus 9 is not possible. Let's join these numbers. 15 minus 9 is 6. So it means this is 6.3. तो अब हमारे पास क्योंकि 9 से नीचे अब हमारे पास जो नंबर है that is +9 and -15.3 and as you know that कि हमने इसके आंसर के साथ लगाना है जी बिगर वैल्यू का साइन तो this would be -6.3. तो फाइनल आंसर होगा -6.3 सेंटीग्रेड temperature. Okay, question 5. The diagram shows quadrilateral ABCD with AD extended to E. Angle BCD is 135, angle BAD is 83 degree, and the angle CDE is 122 degree. Find the value of X. Okay, we are supposed to find the value of X. So here I can see this is a quadrilateral. It means इसके जो चारों angles होंगे, interior angles, उनका sum 360 होगा. तो सबसे पहले तो मैं जरा ये फाइंड कर देता हूँ मिसिंग एंगल बिकॉज दिस इज अ सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो मैं ये वाला डी वाला एंगल निकाल सकता हूँ 180 minus 122 it means this would be 10 minus 2 is 8 7 minus 2 is 5 and 1 minus 1 is 0 so this angle is 58 degree. Okay, now we are supposed to add these three angles or we can write like this x plus 135 plus 58 plus 83 is equal to 360 degree. Okay, तो अब मेरे पास 135 plus 58 plus 83 is equal to 360 degree है तो x value is equal to 360 minus 135 minus 58 minus 83. तो सबसे पहले 360 minus 135 कर लूँ मैं. This is 10 minus 5 is 5, 5 minus 3 is 2, 3 minus 1 is 2, 225. 225 minus 58. This would be 15 minus 8 is 7, 11 minus 5 is 6, 167, and then minus 83. 7 minus 3 is 4, 6 minus 8 is not possible, 16 minus 8 is 8, so final answer is 84. 84 degree. Okay, write 308. Question number 6 is write 308 as a product of its prime factor. Prime factorization is always same. हमने LCM की तरह से इसके जो factors find करने हैं 308 divided by the least number, smallest number is 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, and 2 4s are 8. Then 2 7s are 14, 2 7s are 14. Then the next smallest number which can divide this one is 7, 7 11s are, and then 11 1s are 11. So its answer would be 2 square into 7 into 11. Okay, the next is find the highest common factor of 308 and 66. ACF means highest common factor. अब हमने क्या करना है जी इसका ACF find करना है तो बड़ा सिंपल इन दोनों को लिख लेते हैं इकट्ठा 66 and 308. दोनों को नंबर डिवाइड 2 कर सकता है तो 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 4s are 8. उसके बाद ये 3 डिवाइड कर सकते हैं दोनों को नहीं कर सकता 3 तो नेक्स्ट नंबर हम सोचते हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर ले. So this would be 11. 11 3s are 33.
11 ones are 11, then 4 is left, 11 fours are 14. So इससे ज्यादा कोई नंबर भी इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर सपोज टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ में हमने सेम नंबर जरूर लेना है जो सबको इकट्ठा डिवाइड कर सकते हो, तो एचसीएफ होगा 2 into 11, इट मींस दिस इज 22. Okay, the next question 7 is, a trapezium is given. The diagram shows trapezium B ABCD. AB is equal to 7 centimeter, DC is equal to 10. The area of ABCD is 85 centimeter square. The perpendicular height of the trapezium is h centimeter. Find the value of h. As we know that the formula for the area of the trapezium is area is equal to 1 by 2 into the perpendicular height into the sum of two parallel sides, which can be considered as a plus b. So now the area is given 85, and first of all notice that all the sides and the area is given the same parameter. Like I can see this is 7 centimeter, 10 centimeter and 85 centimeter square. So 1 over 2, no need to change any side. Height we are supposed to find, and the parallel sides are these 7 and 10. 7 plus 10. So now 8 plus 85 is equal to 1 over 2 into h into 17. So now 2 is dividing here. हम इसको उधर लेके जाते हैं, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 85 2 उधर हो गया हमारे पास 170 is equal to h into 17. Now h is equal to 170 over 17. So height is equal to 10 centimeter. Okay, let's move to the next question. This is very simple algebra. Question number 8. 6x plus 15 minus 2x plus 8. सबसे पहले लाइक वैल्यूज को हमने सिंपलीफाई करना है. 6x में से 2x चले गए तो 4x आर लेफ्ट, एंड 15 में से 8 ऐड कर देना हमने 15 में, तो दिस वुड बी डेफिनेटली 23. So 4x plus 23 is the answer. Next B part is expand and simplify. X minus 5 whole square will be considered as a minus b whole square. So a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2 into a into b. So this would be x square plus 25 minus 10x. Because the question is given expand, we have already expanded, there is no need to solve it further. Okay, now the next question is, okay, insert the correct symbols equal, greater or smaller to make each statement correct. अब 0.6 kg is maybe greater, smaller or equal to 60 grams. तो हम चेंज करते हैं, बिकॉज ये तभी डिसीजन होगा जब हमारे पास ये दोनों सेम क्वांटिटीज में आएंगे. तो लेट्स चेंज दिस केजीज इनटू ग्राम्स. 0.6 kg is gonna change into grams times 1000. So this would be 600 grams. So it means this is now 600 grams. Okay, this is 15 kilometer and 15,000 meter. So if you want to change 15 kilometer into meters, so there are 1000 meters in 1 kilometer, so this is equal to 15,000 meter. So this means 15,000 meter, and this is 4 meter square, 400 centimeter square. If you want to change 4 meter into centimeter, then simply multiply by 100. But when you are moving from centimeter square to centimeter square, तो जो multiplier भी है उसका भी square लेना पड़ेगा. तो ये 4 into 10,000. So now this would be 40,000 centimeter square. So 40,000 centimeter square. Okay, now let's take the decision. So 600 gram is greater than 60 gram. 15,000 meter equal to 15,000 meter. And this is 40,000 centimeter squares are definitely greater than this one. So, okay. The next question is, by writing each number correct to one significant figure, estimate the value of this one. अगर आपने one significant number लिखना है तो पहला नॉन जीरो नंबर which is 3 से नेक्स्ट नंबर जो है 6 है, तो डेफिनेटली इसको हमने
इंक्रीमेंट देना है, और डेसिमल से पहले जितने नंबर बचेंगे उनकी जगह 0. दिस रूल इज विद द सिग्निफिकेंसी. माइनस, अब फिर पहला नॉन जीरो नंबर 1 है तो 1 से आगे 8 है, दिस विल बी चेंज टू 2, और पॉइंट से पहले जितने नंबर बचेंगे उनकी जगह 0. पॉइंट से पहले नॉन जीरो नंबर जो है 5 है, 5 से आगे 2 है तो देर इज नो इंक्रीमेंट, और पॉइंट से पहले जितने नंबर बचे हैं उनकी जगह 0. दिस वुड बी 400 minus 200 is 200 divided by 50. So it means 5 4s are 20. 4 is the answer. Okay. Question number 11. In a survey, 3 out of every 100 women, 3 out of every 100 women were taller than 1.9 meter. One of these 100 women is picked at random. Calculate the probability that she is not taller than 1.9 meter. If out of 100, 3 are greater than 1.9 meter, then definitely the rest would be smaller than 1.9 meter. तो अगर 3 ये हैं तो फिर जो रिमेनिंग है 97, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी इज 97 over 100. So this is the answer, 97 over 100, or you can write in decimal, which would be 0.97. Okay, the next is a new housing state is being planned. There are 3 possible plans, A, B, and C. A survey was carried out to see which plan people preferred. The relative frequency table shows the results. Plan relative means frequency means the probability. Plan A, B, C, relative frequency is 0.3, 0.5, and 0.2 respectively. 52 people preferred plan C. So always keep remember the probability and their quantity is directly proportional to each other. It means directly proportional means you can use the cross multiplication method. So find how many people preferred plan A. बड़ा सिंपल कर लेते हैं. C quantity is given, so it means 0.2 probability is representing 52 people. Then for A, which is 0.3, it would be representing how many people? Cross multiply. So 0.2x is equal to 52 into 0.3. और डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताई है कि 52 को सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 3 to the 6, 5 to the 15. और इस पूरी मल्टीप्लिकेशन में कितने डेसिमल वैल्यूज हैं? 1. So it means from the right you are gonna put this decimal 15.6. So 0.2x is equal to 15.6, and now we have to find x value by 15.6 divided by 0.2, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड. सो अब 15.6 over 10 is 2 over 10. Now 156 over 10 times 10 over 2, cancel. 2 7 the 14, 1 is carry, and this is 2 8 the 16. So 78 people are there. And similarly, calculate the total number of people surveyed. अब हमारे पास इस तरह से अगर C के people जो हैं वो 78 हैं, C के people जो हैं वो 52 हैं, सॉरी 52, और अभी हमने A के फाइंड किए हैं वो हैं जी हमारे पास कितने? 78. अब इसी तरह से हम अगर B के फाइंड कर लें 0.5, so which means half of the quantity. हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 0.3 and 0.2 मिलकर 0.5 बनता है, तो A और C मिलकर B के भी बराबर हैं. इनकी प्रोबेबिलिटीज बता रही हैं. तो अगर A और B के हमारे पास बनते हैं जी 78 plus 52, which is equal to 120 plus 10 130. तो इट मीन्स B के जो लोग होंगे वो होंगे जी 130 टाइम्स, सॉरी B के जो लोग होंगे वो इनके बराबर होंगे, बिकॉज दोनों के 0.3 प्लस 0.2 0.5 बनता है. तो इट मीन्स टोटल सर्वे में जो लोग हैं वो हैं 130 प्लस 130 मीन्स 260. क्वेश्चन नंबर 11. ओके. Bernard bought a game in the USA for $15. Alice bought the same game in Zambia and paid the equivalent price in Zambia kwacha, which is ZK. Exchange rate is 1 ZK is equal to $0.075. Calculate the price that Alice paid. Now the price is given, beta. ZK
and dollars is 1 zk equal to $0.075. If we want to convert this $15 into zk, because he said equivalent price, तो इसका मतलब है कि वो जितने उसने डॉलर्स पे किए हैं वो कितने zk बनते हैं, हमने वो फाइंड करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 1 are 15 and 0.075 into x. तो इसका मतलब है कि हमारे पास x हो जाएगा जी 15 divided by 0.075. Now point is finished. 1 3 zeros are there. It means this is equal to 15 multiply 1000 over 75. 15 ones are 15, 15 5s are 75, and now 5 ones are 5, 2s are 10. This is equal to 200 zk. Okay, the next question is 13. Two numbers x and y are such that x ratio y is equal to 5 ratio 11 and x plus y is equal to 112. Find x and y. So we know that the ratios can be presented into the fraction x over y is equal to 5 over 11. So from this combination, I can find the x value. That would be definitely equal to 5y over 11. Now put into the other given equation, which is x plus y is equal to 112. So in this equation, I'm going to replace, in place of x, I'm putting 5y over 11 plus y is equal to 112. So this is, now we have to solve this equation. LCM lena padega. So this would be 5y plus 11 into y is 11y over the product of the denominator is 11 is equal to 112. Now 5y plus 11y would be 16y is equal to 112 into 11. Now y is equal to 112 into 11 over 16. और 16 के टेबल में हमारे पास, इसको हम कटिंग करते हैं. 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 6 are 12, and 8 7s are 56. So 7 into 11 is 77. That is y value. And for x हम y की वैल्यू इधर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. So x is equal to 5 into 77 over 11. 11 7 to 77, 7 5 to 35. So it means x value is 35. Okay, for the next question. This is the term-to-term rule for a sequence. Multiply 2 and add 3. The first three terms in the sequence are 1, 5, and 13. Write down the next term in the sequence, because the rule is given multiply 2 for the current sequence or the current term and then add 3. Like let's verify. इसको multiply 2 करें बेटा, 2 ones are 2 and plus 3 करो तो next time term आ गया हमारे पास 5. अब 5 को हम 2 से multiply करते हैं. 5 2 are 10, 10 plus 3 13. तो हमने अगर नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो बड़ा सिंपल, 13 into 2, इसमें हमने ऐड कर देना है 3. 13 to the 26 plus 3 is equal to 29. This is the term to term rule for the different sequence. Square and subtract. इसका मतलब है कि जो टर्म फाइंड करनी है उससे पिछले टर्म का स्क्वायर लेना और उसमें से सब्ट्रैक्ट 5 कर देना है. Write down the fourth term in the sequence. The second and the third term is given. Second and the third term is given. This is the second term and this is the third term. तो हमें अगर फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो गिवन रूल के अकॉर्डिंगली स्क्वायर लेना है जी. -4 का स्क्वायर है जी हमारे पास, and we have to subtract 5, which will be equal to 16 minus 5 means 11. Write down the two possible values for the first term in the sequence. अब इसका मतलब है कि हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है. नाउ बिकॉज द सेकंड टर्म इज गिवन, तो सेकंड टर्म जनरेट हुई होगी कि फर्स्ट टर्म को हम एक्सपोज कर लेते हैं, x का स्क्वायर, और उसमें से सब्ट्रैक्ट 5 किया होगा तो डेफिनेटली द सेकंड टर्म वुड हैव जनरेटेड. अब ये हो जाएगा हमारे पास x square is equal to -1 plus 5. So x square is equal to 4, and then taking square root, it would be x is equal to plus minus 2. It means -2 and +2. These are two answers. Okay.
Question number 15. Two villages, Foxby and Glanton, are joined by a footpath and a road. Abdul walks along the footpath from the Foxby to Galanton. He walks for 2 hours and 14 minutes and arrives at Galanton at 15:10. Calculate the time Abdul left Foxby. बहुत आसान है, हमने रिवर्स चलना है जी, टाइम फाइंड करना है because we arrived at 15:10 और journey took 2 hours and 14 minutes. It's very simple. Let's move backward for 2 hours. 2 hours पीछे जाओगे तो ये हो जाएगा 13:10. अब हमने 14 मिनट्स और बैक जाना है, तो पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ कि 10 मिनट्स चला जाता हूँ. 10 मिनट्स माइनस, तो दिस वुड बी डेफिनेटली 13. अब फिर और 4 मिनट्स मैंने पीछे जाना है, तो -4 किया तो 13 में से 4 मिनट्स बैक गए तो वो 12:56. So this would be the time, 12:56. Okay, the next part is the distance by road between the Foxby and the Galanton is 15 kilometers. A bus travels along the road between the Foxby and Galanton. The bus journey takes 12 minutes. Calculate the average speed for the bus in kilometers per hour. We know that the average speed is equal to total distance over time taken. So the total distance is given 15 and the time is given 12 minutes. But the thing is that because we have to give answer in kilometer per hour, it means we need to change this 12 minutes into hours first. So 12 divided by 60. 12 ones are 12 and 12 5 are 60. It means this has to divide by 1 over 5. It's very simple. 15 divided by 1 by 5. Then 15 times 5 over 1, which would be 75 kilometer per hour. It means 75 kilometer per hour. The bearing of Galanton from Foxby is 128 degree. Calculate the bearing of Foxby from Galanton. It means reverse find karna. For this, we need to see the diagram. Bearing Galanton from Foxby is 128. The reverse chalna hai. From Foxby is 128. Okay, this is from Foxby. Okay, let me make a correct straight line. Okay, now from this, let's join with a straight line. Okay, now this is given that the bearing is it starts always from north. So this is the total angle is 128, and I'm gonna splitting this angle into two parts. As you know that this is north, south, east, west. So between the north and the east, this would be 90. So 90 plus 38 degree. Now because we are supposed to find the bearing of Foxby by Galanton, तो अब मैं Galanton पर भी ये चीजें ड्रॉ करने लगा हूँ ताकि हमारे पास इजी हो जाए इसको सॉल्व करना. Okay, so it means we have to find the bearing from Galanton के नॉर्थ से चल के हमने यहाँ तक आना है. So we know that this is 90, 90, and 90. Only we need to find this angle little part, and we know that this is east-west line, this one, and this is also east-west line, so they are parallel, and this is a transversal which is coming between them. So इसका मतलब है कि ये 38 डिग्री है, तो this would be also 38 डिग्री. हमारे पास टोटल बेयरिंग जो हो गई वो हो गई हमारे पास 90 plus 90 plus 90 plus 38, which would be definitely 270 plus 38. And 270 plus 38 is 308 degree. So the answer is 308. Okay, so let's move forward to the next question. Question number 16. I hope you're enjoying this paper. For making the maths easy, please do subscribe the Maths with Zohaib Malik channel.
and keep watching the videos for getting the best score, best grade in maths. Maths is very easy. I usually used to tell my students maths is a game, just try to understand and apply the methods. It's a game, it's a fun. When you will start playing with the numbers, then you will find that this is the easiest subject in this world. Okay, so now here we go. Easiest क्या, अगर मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया है? Maybe many of the students have started laughing कि ये सर क्या कह रहे हैं? Because what I feel, that is the thing which I'm telling you. Okay, now here I can see the diagram. Triangles A, B, and C are drawn on the grid. Describe fully the single transformation that maps A onto B. A onto B, I can see the size is same between the object and the image. It means ये isometric transformation है, और isometric के अंदर हमारे पास reflection, rotation, and translation है. So I used to tell to my students always start checking from the translation. Is it a translation? No, इसके अंदर हमारे पास shape बिल्कुल exactly same होती है. तो ये ट्रांसलेशन नहीं है. रोटेशन में तो रोटेट होना ही होना होता है. दिस इज नॉट अ रोटेशन. रोटेट करके भी देख लो एक और बी पर. दिस इज नॉट. बट आई कैन सी ऑब्जेक्ट इमेज एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, तो हमारे पास दिस इज अ रिफ्लेक्शन. अब हमने रिफ्लेक्शन लिख दिया बेटा, एक नंबर मिल गया. ओनली 1 मार्क, बिकॉज अभी हमने मिरर लाइन बतानी है. सो आई कैन सी व्हाट आई कैन सी कि हमारे पास मिरर लाइन इसकी वर्टिकल लाइन है, बिल्कुल जो दरमियान से जाए. तो 1 2 3 4 ब्लॉक्स हैं. ऑन अ सेकंड ब्लॉक बेटा ये हमारे पास ये हो गए जी, which is little bit on the side from the line. So this would be x is equal to 1. Along x is equal to -1 line. So this is the reflection. Okay. For next, describe fully the transformation that maps A onto C. Okay जी, A onto C. A onto C, फिर मैं बताऊं आपको कि ट्रांसलेशन में शेप एज इट इज होती है. जैसे ए हॉरिजॉन्टल है इस वक्त, तो हॉरिजॉन्टली कहीं में कहीं किसी और जगह पे होती तो दैट वुड बी कंसिडर एज द ट्रांसलेशन. बट ट्रांसलेशन नहीं है. रोटेशन में मैं रोटेट करके देख रहा हूँ कि इसको मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करूँ तो बिल्कुल एज इट इज बन सकती है. बट इजीएस्ट वे इज कि हमने सबसे कम मूवमेंट की तरफ जाना है, विच आई कैन सी कि अगर हम इसको क्लॉकवाइज मूव करें तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हुई है इसकी. दिस इज द रोटेशन. रोटेशन क्लॉकवाइज. और अब हमने फाइंड करना है इसके की पॉइंट्स. मैं जरा इधर बना लेता हूँ कि दिस इज रोटेशन एंड दिस इज क्लॉकवाइज. और मैंने आपको बताया कि हमने अगर एंगल देखना है तो वो दैट इज सिंपल कि अगर हम इसको फेस का नाम दे देते हैं तो ये फेस हमारा देख रहा है जिस वक्त नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. इफ दिस फेस इज लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट नाउ, तो अब यही फेस हमारा यहाँ आ गया तो ये साउथ की तरफ देख रहा है, तो इट मींस दिस इज 90 डिग्री. अब हमने फाइंड करना है जी सिर्फ और सिर्फ सेंटर, बिकॉज रोटेशन इन 3 चीजों से पूरी होती है हमेशा इसका, वरना एक भी चीज मिस होगी तो नंबर कट जाएगा आपका. तो दिस इज फॉर दिस. मैंने बताया आपको कि दो हमने कोरिस्पॉन्डिंग लाइंस पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, लाइक फॉर विद अ स्ट्रेट लाइन. तो इसको ज्वाइन करें, इसका परपेंडिकुलर सेक्टर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो आई कैन सी कि वो बिल्कुल मिड में इधर से जा रहे हैं हमारे पास. और कोई और दो पॉइंट्स के स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे हम. जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि इफ आई कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, और फिर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो वो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो इनका सेंटर दोनों का मीटअप करेगा वो होगा दैट वुड बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ होगा. सो दिस वुड बी 0 and 1. तो हमारे पास पूरी स्टेटमेंट इसकी बनती है जी. दिस इज द A on to C. This is rotation 90 degree clockwise about center 0 and 1. Okay, the next is triangle D is the image of A after an enlargement scale factor of 2. So point note करना हमने, scale factor is 2 and we have to do the enlargement and the center is 1 2.
So it means we are supposed to draw the diagram now. Okay. Center, सबसे पहले हमने center mark करना है. The center is 1 and 2 and the scale factor is 2. तो मैंने आपको बताया इसका easiest way और 100% confirm करने के लिए translation is the better way to draw this enlargement. हमने from the center हमने हर point की translation find करनी है. Like हमारे पास A को अगर हमने enlarge करना है तो A के 3 points हैं, तो हमने हर point की center से translation देखें. तो ये पहला point अगर ये है तो इसकी जो translation है वो 0 and 0 है, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर खड़ा होगा. तो इसको अगर टाइम्स 2 करेंगे विद द स्केल फैक्टर हमने मल्टीप्लाई करना है, दैट वुड रिमेन 0 and 0. ये यहीं पे लगेगा. और इफ वी टेक दिस पॉइंट, तो यहाँ पर मेरे पास जो इसकी ट्रांसलेशन बनती है, फ्रॉम द सेंटर दिस इज 2 units फॉरवर्ड एंड 0 मूवमेंट ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस पे. तो 2 0, इसे टाइम्स 2 करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 0. इसका मतलब है कि सेंटर से मुझे 4 यूनिट आगे जाना है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट कोई नहीं है. अब मैं इस पॉइंट की निकाल लेता हूँ. फ्रॉम द सेंटर ट्रांसलेशन 2 units फॉरवर्ड 1 unit अपवर्ड, so this would be 2 and plus 1. then if I take it times 2, 4 and 2. फ्रॉम द सेंटर मुझे 4 यूनिट आगे जाना है और 2 यूनिट ऊपर जाना है. तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं इसके साथ, तो दिस वुड बी लाइक दिस. दिस इज द shape D, which can name this shape D. Okay, let's move to the next question. Okay, question number 17. The diagram shows an isosceles triangle ABC where AB is equal to AC. Okay, AB is equal to AC and D is the point on AC such that ADB is 90 degree and E is the point on AB such that AEC is equal to 90 degree. Show that the triangles ADB and AEC are congruent. ADB and AEC are congruent. So here I can see the angle A is common between these two shapes. Okay, and now this angle 90 degree and 90 degree, so I can name it AEC is equal to ADB is equal to 90 degree. अच्छा जी, दो angles prove हो गए equal, और third side I can see the condition is given AB, which is the whole length of this triangle ADB, और AC, which is the whole length of this triangle AEC. तो इसका मतलब है कि AB is equal to AC, which is given in the question. So it means they are satisfying this property, angle side. Always remember giving the name of the property is very much important, because 1 mark is for this property. अगर property नहीं लिखोगे तो 1 नंबर से मिस कर बैठोगे, हाथ धो बैठोगे, जिसको simple words में कह सकते हैं. Like otherwise you would be getting 2 marks. Okay, here we go. Solve the simultaneous equation. This is very easy. Usually I used to solve this by elimination method. So I name it equation 1 and this is equation 2. So if I want to eliminate the variable x, तो मैं ऊपर वाली equation को 3 से multiply कर दूं, तो x plus 6y is equal to 0 into 3, क्योंकि उसने सबसे multiply होना है. तो ये मेरे पास बन जाएगी equation 3x plus 18y is equal to 0. और दूसरी तरफ मेरे पास इक्वेशन है 3x minus 2y equal to 10. एंड इफ आई चेंज देयर साइंस, तो इसका मतलब है नीचे हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस. एंड इफ आई स्टार्ट सॉल्विंग देम, so I will get 3x minus 3x cancel, 18 plus 2y would be 20y, and 0 minus 10 would be minus 10. So y is equal to minus 10 over 20, which means negative 1 by 2, or you can write negative 0.5. उसको हम पुट कर देते हैं जी इन इक्वेशन 1. So this is x plus 6 into negative 0.5 is equal to 0. X minus 3 is equal to 0. So x would be equal to 3. So this is 3. Okay, the next question is, y is proportional to x minus 1 whole square. So y is proportional to x minus 1 whole square, which can be equal to k times x minus 1 whole square.
Now they're asking, given that y is equal to 18, x is equal to 4, then find y when x is equal to 6. So these two values are given to find k. Put कर देते हैं जी, y is 18 and the x is 4 minus 1 whole square. So 18 is equal to k into 3 whole square, which is 9. So k is equal to 18 over 9, because 3 square is 9. So k value is 2. So now equation becomes, so y is equal to 2x minus 1 whole square. Now we have to solve this one. When the x is 6, then find y. So y is equal to 2 into 6 minus 1 whole square. Y is equal to 2 times 5 whole square, which is 2 into 25. So the final answer is 50. This is 50. We will come here, 50. Okay, the next is question number 20. 20 is, we need to draw these graphs first. So then I would have to mark these lines here, which I can see the page. Okay, here we go. The line y 2y is equal to x is drawn on the grid. On the grid, draw the graph of y is equal to 2. Y is equal to 2 is a horizontal line, which I can draw easily. Y is equal to 2 is very simple to draw, which is always a horizontal line which is intersecting, जो कि y को 2 पे कट करके जाए. Okay जी, ये y is equal to 2 draw हो गई. For the next, we need to draw this y plus x is equal to 4. अब हमने इसको draw करना है. First of all, तो y को subject बना लेते हैं, 4 minus x. इसको ये लीनियर इक्वेशन है, इसको ड्रॉ करने के लिए हमें टेबल बनाने की जरूरत है. तो टेबल में हमारे पास x एंड y, x की कोई 3 वैल्यूज कोई भी सपोज कर लेते हैं जो कि इस टेबल के ऊपर हों. लेट्स सपोज जी मैं ले लेता हूँ 0, 2 एंड 4. x को रिप्लेस करें जब 0 इसके अंदर, 4 माइनस 0 इज 4. 2 पुट करेंगे तो आंसर विल बी 2, और 4 माइनस 4 इज 0. So 0 and 4, this is the first point. 2 and 2, this is the second point. And 4 and 0, this is the third point. अब इस पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है जी. ओके जी, this is drawn. Okay जी, let's go to the next part. On the grid, shade and label the region are defined by the following inequalities, which is, let me write here. X plus y is less than equal to 4, 2y is greater equal to x, y is less than equal to 2, and x is greater equal to 0. Okay ji, let's come back to the diagram. Okay, so now we need to shade the area. X plus y equation is, line is this one. We have all drawn this one. X plus y is less than equal to 4. And then 2y line is this one. 2y greater equal to x. And y is equal to 2 is this one. Y is greater, smaller equal to 2. And x is equal to 0 is the line which is a vertical line. So it means we can say this one is x is greater than equal to 0. अब हमने एक ऐसा एरिया डिफाइन करना है जो कि इसको सेटिस्फाई करता हो. लाइक x प्लस वाई की जो लाइन है ये वाली, इससे हमने नीचे रहना है, और 2y इक्वल टू x वाली लाइन से हमने ऊपर रहना है, और y इक्वल टू 2 की लाइन से हमने नीचे रहना है, और x इक्वल टू 0 की लाइन से आगे रहना है. x प्लस वाई वाली लाइन से हमने नीचे रहना है. ओके, दूसरी लाइन से, इस वाली लाइन से हमने ऊपर रहना है, y इक्वल टू 2 की लाइन से नीचे, और x इक्वल टू 0 की लाइन से आगे. तो इसका मतलब है here I can find this is the area जो कि इस सबको सेटिस्फाई करता है. So this is the area जो कि हमने शेड कर देना है. अगर लाइन के ऊपर भी, इन लाइंस के ऊपर भी शेड हो जाए तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज इक्वल टू का साइन दिया होगा तो हमारा वो एरिया भी, दैट इज द पार्ट ऑफ द एरिया. बट अगर हमारे पास इक्वल टू ना हो तो फिर नहीं करना, वरना गलत. ओके जी, वी आर जस्ट नियर टू फिनिश द पेपर. फैक्टराइज के अंदर हमने देखना है जी कॉमन कहाँ ले सकते हैं. लाइक आई कैन सी 3cx minus 6cy plus 2bx minus 4by minus 4by. Okay,
कॉमन क्या ले सकता हूँ जी यहाँ से 3 and c. So this is x minus 2y. 2b is common, so this is x minus 2y. क्योंकि वो दोनों सेम है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो x minus 2y and 3c plus 2b. So this is the final answer. Now next one is factorize this. 6x square plus 7x minus 10. I can see this is a quadratic equation. इसकी factorization करते हैं. 6 into 10, which is equal to 60, because I have multiplied these two numbers. Now I have to think about two numbers जिनका product 60 हो और वो plus या minus होकर plus 7 आप बनाते हो, तो हमारे पास क्या numbers हो सकते हैं? 60 product 60 और वो plus और minus होकर plus 7 बनाते हो, तो this would be okay, 60 के factor 1 into 60, 2 into 30, 3 into 20, 4 into 15, 5 into 12. So here I go 5 into 12. 6x square plus 12x minus 5x minus 10. So this is 6x is common, so this will be x plus 2. 5 is common, x plus 2. And the common factor is x plus 2 into 6, x minus 5. So this is the final answer. Okay, the next is a car has a mass of 2400 kg, correct to the nearest 100 kilogram. A caravan has a mass of 1460 kg, correct to the nearest 10 kilogram. Calculate the lower bound for the total mass of the caravan and the car. टोटल का लोअर बाउंड निकालना है, इट्स नॉट अ बिग डील, यानी कि दोनों के लोअर बाउंड्स को हमने सिंपली ऐड करना है. तो 2400 kg का लोअर बाउंड होगा, बिकॉज दिस इज नियरेस्ट टू द 100 किलोग्राम. 100 का हाफ हो गया 50, तो हमने 50 kg माइनस करना है. दिस विल बी 23 and 50 kg. और दिस इज लोअर बाउंड ऑफ कार, एंड देन लोअर बाउंड ऑफ कारवा, which is 1460 minus nearest to 10 kilogram. 10 का हाफ होगा 5 kg, तो इसका मतलब है कि इसमें से हम 5 kg माइनस कर दें तो 1455 kg. Now we need to find the difference, because उसने कहा था no, we need to add them, क्योंकि total mass find करना है. तो 2350 kg, 1455 kg. 5 plus 0 is 5, 5 plus 5 is 10, 4 plus 4 is 8, 2 plus 1 is 3. This is 3805 kg. Okay, the next is 23. A is equal to b square plus c plus d. Find a when b is equal to this one, c is this one, d is. Okay, let's replace the values. So b is 4 into 10 square whole square, because b square, plus c value is 6 into 10 cube, over d is 2 into 10 square. ओके जी, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास. होल स्क्वायर है, इसका मतलब है 4 का भी स्क्वायर है और 10 का भी स्क्वायर है, तो दिस वुड बी 16 into 10 power 4, बिकॉज पावर के ऊपर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है. प्लस 6 into 10 power 3 ओवर 2 into 10 power 2. ओके, आई कैन सी द सिंपलेस्ट वे. डिनोमिनेटर में 10 स्क्वायर है, मैं अब इसको सॉल्व इस साइड पे करने लगा हूँ, तो मैं ऊपर से 10 power 2 कॉमन ले लेगा हूँ. This would be 16 into 10 power 2 plus 6 into 10 power 1, और नीचे बच गया हमारे पास 2 into 10 power 2. ये कैंसिल हो गया. और अब 16 into 10 square means I can change it into 1600. 6 into 10 means 60 over 2. So this would be 1660 divided by 2, और उसकी कटिंग कर देते हैं. This would be 2 8 is 16, 2 3 is 6, 0 8 30. Okay, rearrange the formula to make b the subject. तो formula is हमारे पास है, मैं इसकी राइटिंग चेंज कर लेता हूँ. This is a is equal to b square plus c over d. अब हमने किसको b को सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले b d जो डिवाइड कर रहा है इधर आएगा. at is equal to b square plus c. Next is
AD minus C is equal to B square. B खतरे स्क्वायर रूट खत्म करना है तो ये हम खत्म करेंगे. दिस विल बी विद प्लस माइनस, तो B is equal to plus minus AD minus C square root. This is the final answer. Okay, the next is m into 10 power 4 into m into 10 square is equal to 36360. Work out for m into 10 power 4 minus m into 10 square. Okay, so from this question, I can take m into 10 power 4 plus m into 10 power 2 is equal to 36360. So I can find m value. M would be equal to m into 10 power 4 plus 10 power 2, 36360. So m value is 36360 over 10 power 4 plus 10 power 2. So here I can put, because I need to find this one, तो इसमें से भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, m कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बच गया मेरे पास 10 पावर 4 माइनस 10 स्क्वायर. और मैं 10 की वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 36360 over 10 power 4 plus 10 power 2 into 10 power 4 minus 10 square. Okay, so now this would be 36360 into 10 square minus 100 over 1, 2, 3, 4 plus 100. So this would be 36360 into 10,000 minus 100 would be 9900 over 10100. These are cancelled. And now 363 times 99 divided by 101. So this would be 36360 divided by 101. So 101, 3s are 303. So this will left with 660 and 60. So now 101, 6 are 606 and 10 is left. So 0 zeros are 0. So this is 360 into 99. And now 360. If I take it 360 into 100, 36000, उसमें मैंने एक 360 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो मैं 360 माइनस कर देता हूँ इसमें से. 0 minus 0 is 0. So now this will be 10, this would be 9, and this will be 5. So this is 10 minus 6 is 4, 9 minus 3 is 6, then 5 and 3. So this is 35640 is 35640 is the answer. Okay, the next is I need to find m minus n. M minus n means 5, because these are two matrices, so इनके corresponding numbers को हमने minus करना है. This would be m minus n would be equal to 5 minus 4, 1 minus minus 2, and 2 minus 3, 3 minus 0. This would be equal to 1, 1 plus 2, this will be 3, this is minus 1 and 3. So this is 1, 3, minus 1 and 3. Now this is given. The product is given.
P and Q, there are two matrices and their product is given this one. It means we have to take their product equal to this one. So P matrix है जी 2, 4, C minus 5, and the Q matrix is 3, 2, minus 2, and D, which should be equal to -2, 0, 19, and 11. क्योंकि इसका रो वाइज चलना है और इसका कॉलम वाइज चलना है दोनों तरफ से ऐसे. तो ले लेते हैं जी 2 into 3 plus 4 into -2, then 2 into 2 plus 4 into D. Now C into 3 minus 5 into -2, then C into 0 minus 5 into 11, and that should be equal to this one, -2, 0, 19, and 11. Okay, this is 6 and -8, which would be -2, and this is 4 plus 4D, 4 plus 4D, and this would be 3C plus 10, 3C plus 10, and this would be 0 minus 55. Sorry, this is 5 into 1. So this is -5C into, oh, sorry, I think something I have done wrong. So this is C into 3 minus 5 into -2, and for this I need to multiply this one. So, but I have multiplied by mistake this one. Let me correct this one. So this would be C into 2 plus -5 into D. So now this would be 2C minus 5D, and that would be equal to -2, 0, 19, and 11. -2 and -2, because two matrices are equal, तो उनको equal हैं तो corresponding elements हम equal ले सकते हैं. तो अब हम ये दो तो equal ले नहीं सकते because no unknown variable is involved. तो 4 plus 4D, 4 plus 4D equal to 0 कर लेते हैं इसका. So this would be 4D is equal to -4, so D is equal to -1. Okay, D is -1. नेक्स्ट ले लेते हैं जी हम C फाइंड करने के लिए. 3C plus 10 is equal to 19. So 3C plus 10 is equal to 19. तो C is equal to हो जाएगा हमारे पास 19 minus 10. 3C is equal to 19 minus 10. तो 3C is equal to 9 and C is equal to 3 because divide कर दिया. These are the answers. Okay, here we go with the last question, and that is about the coordinate geometry. Question number 25 is the diagram shows a circle with center O, center C, which is 0, 1, P is 3, 5, is a point on the circumference of the circle. Find the equation of the tangent at P. अच्छा जी, हमें equation of the tangent find करनी है P पर. तो इसका मतलब है कि which is a straight line जो कि tangent है, तो equation of a straight line y is equal to mx plus c. अब हमें एक ग्रेडियंट चाहिए और एक वाई इंटरसेप्ट चाहिए, और ग्रेडियंट के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए. तो लेट्स यूज द सर्कल प्रॉपर्टीज कि अगर मैं सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ कर दूं यहाँ पर सीधा, तो आई नो कि दिस वुड बी फॉर्मिंग 90 डिग्री. अब क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो जो ग्रेडियंट CP का होगा वो उस टेंजेंट का रेसिप्रोकल और साइन चेंज होगा. ओके, लेट्स फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ CP. M of CP is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1, which is 4 over 3. So the gradient of tangent would be -3 by 4. Now here we go with the equation y is equal to my mx plus c. अब c फाइंड करने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट सिर्फ यही ले सकते हैं बिकॉज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ओनली. तो पुट करते हैं जी y की जगह पर 5 और x की जगह पर 3. So now this is 5 is equal to -9 by 4 plus c. अब हम ऐसे करते हैं कि इस फ्रैक्शन को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो दिस वुड बी 5 plus 9 by 4 is equal to c, and let's take the LCM. This would be 20 plus 9 over 4 is equal to c.
So C is equal to 29 by 4. So the final equation is y is equal to negative 3 by 4x plus 29 by 4. इनको simplify भी कर लेते हैं. Y is equal to negative 3x plus 29 over 4 because the denominator is same. This would be 4y is equal to 3x plus 29. ये भी ठीक है. और 4y plus 3x is equal to 29. So we have finished the paper. So I hope so that you would have understood the paper, beta. So at the end, the summary is that, beta, आपने एक तो टाइम को बड़ा कीनली देखना है. टाइम आपका वेल मैनेज्ड होना चाहिए और चीज़ों को बड़े इजीली और रिलैक्सिंग मोड में लेना है आपने. ठीक है. सो इसके साथ ही अभी ख़त्म करने लगा हूँ एंड आई विल बी सॉल्विंग द अदर सीरीज एज वेल. तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर watching or for understanding the new papers as well. Okay, thank you very much. Allah Hafiz.